हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी डीबीटी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, नेट, जूनियर रिसर्च फेलो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या कोई भी पीएचडी की एग्जामिनेशन? आज मैं लाया हूँ टॉप 50 कॉन्सेप्ट्स, टॉप 50 टॉपिक्स जो आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, यू विल डेफिनेटली फाइंड दीज क्वेश्चंस पॉपिंग अप इन योर एग्जामिनेशंस। सो दीज आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसमें मैंने डिवाइड करा है इस लेक्चर को। सेल बायोलॉजी, जहां पे आप सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल फंक्शन, सेल कम्युनिकेशन, सेल ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेयर यू स्टडी अबाउट द ओपेरॉन्स, ट्रांसक्रिप्शन, म्यूटेशंस, राइट, सेंट्रल डॉगमा। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जहाँ पे आप अलग अलग अरेबिडोप्सिस, थैलियाना, जेब्राफिश, विद जीन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो। थोड़ा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जर्म सेल लेयर्स अलग अलग, ectoderm, endoderm, mesoderm. Applied biology, where you study about the flow cytometry, circular dichroism, NMR, X-ray crystallography, RT-PCR, Western blotting, electrophoresis, SDS page, right? Different biotechnique, fish, FRAP, FRET, all of these techniques. Physiology, human physiology as well as animal physiology as well as plant physiology. So animal and plant दोनों physiologies में आपको hormones, plant hormones, animal में अलग system, cardiovascular, neurological, hepatic, hematological, है ना, lymphatic, endocrine, dermat, सारी की सारी systems, reproductive, gastrointestinal, genitourinary, सारी systems, basic function, organ, parts, enzymes. Then microbiology and biochemistry were mostly the cycles, biomolecules, carbs, protein, lipids, inki deficiency disease, enzymology, okay, all of those things, vitamins आ गए, minerals, सारी चीजें। Microbiology में अलग अलग sterilization, biosafety, bioethics, okay, BSL labs. Evolution में you'll study about orthologs, paralogs, analogous, homologous organs, Charles Darwin theory, Lamarckism, primordial swoop, different types of effects, Bohr effect, like, the different terms that we are going to study. So here, paralogs and orthologs, homologous होते हैं दोनों. So what is the difference between an ortholog, paralog? इस पे सवाल आते हैं. Mendel's law of inheritance, segregation, independent assortment. Mendel के तीनों लॉ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, सेग्रीगेशन एंड सभी के सभी लॉज पे सवाल आते हैं. हार्डी विनबर्ग्स इक्विलिब्रियम, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर कब लेते हैं, 2pq कब लेते हैं, राइट, डोमिनेंट, रिसेसिव. मिसल्स एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट, N14 N15 के हाइब्रिड के साथ क्या हुआ. पेडिग्री, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव. इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ते चलेंगे. ओके, द डिफरेंट डिजीज, हंटिंगटन, कलर ब्लाइंडनेस, hemophilia, where do they fall. Biotechniques, of course, electrophoresis, the different like beta mercaptoethanol का role, SDS page का role, trypsin का role, right, triazole buffer का role. So RT-PCR, blotting, how do you carry out, what is Ponceau stain, Comasi blue, ethidium bromide, housekeeping genes क्या होती है, correct? So all of these things are included. The different primers, रामचंद्रन प्लॉट्स, फाई एंड साई की वैल्यू ये आपको पता होनी चाहिए. जैसे लाइक इन द ग्राफ, जब आप एनेक्सिन वी और फिटसीड एक्सट्रैन को प्लॉट करते हैं फॉर द सेल, राइट, वैसे ही यहाँ पे भी आपको प्लॉट आता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ये आपको अलग अलग हेलाइसिस पता चलते हैं बेस्ड ऑन द डायहेड्रल एंगल. देन प्रोटीन एंड जीन सीक्वेंसिंग, तो इनकी अलग अलग बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टूल्स है. आपको ब्लास्ट, फास्टा, कॉम्फा, कॉम्सिया, MM2, श्रोडिंगर, MOE. Then Sanger method, Edman's method, pyro sequencing, next generation sequencing, okay, Dansile chloride method, different methods of sequencing. अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, कार्ब ट्री इफेक्ट, पैस्चर इफेक्ट, वैल्डेन्स इफेक्ट, हैल्डेन्स इफेक्ट, वॉरबर्ग्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट. बोहर आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में है, पैस्चर कार्ब ट्री आपका ग्लाइकोलिसिस में है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में. ओके, सो आपको अलग इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन वर्सेस ट्रिप्टोफैन कैटाबॉलिक कौन सा है, एनाबॉलिक कौन सा है, इंड्यूसिबल कौन सा है, नॉन इंड्यूसिबल कौन सा है, परमिएज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ट्रांसएसिटाइलेज, ZYA जीन्स क्या है. ओके, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन को आपको सारे के सारे एंजाइम्स के बारे में, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, टोपियोइसोमरेज, ऑल द एंजाइम का रोल एंड फंक्शन. डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, सिंगल स्ट्रैंडेड रिपेयर, नॉन होमोलोगस एंजॉइनिंग, SOS रिपेयर. ओके, अलग अलग टाइप्स के रिपेयर होते हैं, थाइमिडीन पेयर्स जो बनते हैं, राइट. देन इम्यूनोलॉजी से टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव, पैसिव, ह्यूमरल,
cell-mediated, innate immunity, acquired immunity, MHC complex 1 and 2, toll-like receptors, non-like receptors, all the immune cells, APCs, antigen-presenting cells, immunodeficient disorders, अलग-अलग जो आप experimentation के लिए like SCID mice, nude mice, beach mice, you use different kinds of mice based on the siRNA knockout model or gene silencing models. Types of RNA, miRNA, piRNA, hnRNA, snRNA, ये भी आप पढ़ सकते हैं. वैक्सीन में क्लासिफिकेशन, टॉक्सॉइड्स, लाइव, किल्ड, subunit, conjugate, polysaccharides. Then certain techniques like fluorescence resonance energy transfer, fluorescence recovery after photobleaching, luciferase enzyme जो कि fluorescence देती है, radioligands, histag, GST tag, GFP, green fluorescent proteins, cell viability, cell permeability, cell proliferation assays, right? MTT assays वगैरह आपको बहुत जरूरी है कि आप पढ़ें इनको. MTT, XTT, MTS. Tryphan blue dye exclusion assay, fit seed extract, tunnel assay, comet assay, correct? Apoptosis, cell death, necrosis, अलग-अलग markers, autophagy के markers, Becklin, LC3, apoptosis के bid, bad backs, BCL2, anti-apoptotic markers, determinants, isotypic determinants, allotypic determinants, BSL level 1, 2, 3, 4 अलग-अलग viruses, biosafety and bioethics क्या होते हैं? Then about Arabidopsis thaliana, you need to know about zebrafish, rDNA, recombinant DNA products. rDNA products के बारे में आपको सारे vectors, ligase, endonuclease, इनका classification पता होना चाहिए. Then we have mutations. So of course the types of mutation, frame shift, induced, spontaneous, missense, antisense, nonsense, addition, deletion, transversion, transition, inversion, substitution, the different types of mutations. What is a Scheindel-Garno sequence? What is a Kozak sequence? What is Pribnow box in prokaryotes, Tata box in eukaryotes, Hogeness box in eukaryotes? ठीक है? Symbiotics क्या होता है? Synergy क्या होता है? Commensalism, mutualism, predator, parasitism, competition. Correct? Ectoparasite, endoparasite. Lichens क्या है? Mycorrhizae क्या है? Plant physiology से C2, C3, C4, CAM pathway, Kranz anatomy. Photomorphogenesis, photomorphs. Photo means dark, photo means light. SDP, LDB, short day plants, long day plants. Auxine, cytokine, gibberellin, abscisic acid के precursor, जैसे methionine is a precursor for ethylene. आपका tryptophan is a precursor for auxine, indole 3 acetic acids, right? Then you must know about enzyme immobilization like glucometers and all, RIA. There are a lot of techniques for enzyme immobilization where you encapsulate, entrap, adsorb, or do covalent binding. Thermodynamics gives free energy, enthalpy, entropy. Vitamins से सवाल आते हैं, deficiency of which vitamin causes, what are the rings present, cofactors, okay, reactions board like decarboxylation, carboxylation, acetyl transfer. Fermentation से जो आपके सवाल आएंगे वो मोस्टली होंगे अपस्ट्रीमिंग, डाउनस्ट्रीमिंग और रिकवरी पे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्मेंटर्स, स्टर टैंक, टावर, फर्मेंटिंग मीडिया क्या होती है, कल्चर मीडिया को ग्रो करने के लिए लाइक फॉर aerobic bacteria, for anaerobic bacteria, what are the different medias in which you grow them? Okay. Cell organelles, right from cell wall, cell membrane, capsule, peroxisome, lysosomes, mitochondria, nucleus, vacuoles, plastid, chloroplast, सारे सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन, एंड आपकी SER, RER, ठीक है, गोल्गाई बॉडीज, हर एक आपको पता होना चाहिए, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स, cell junction, gap, adherence, tight, desmosomes, hemidesmosomes, tertiary and secondary messengers, CAMP वगैरह. Monoclonal hybridoma cell technology where you produce a monoclonal antibodies. Correct? You should know about it. Lamp brush chromosome, Philadelphia chromosome and Balbiani rings. इससे भी सवाल आपके बनते हैं, lamp brush chromosomes, Philadelphia chromosomes, Balbiani rings से. Cook-Stens base pairing, bDNA, aDNA, zDNA, different types of DNA. What is pleiotropy? When one gene shows multiple effect. So polygenic is multiple genes showing single effect. Redundancy, repeating again and again. Synergy, combination. Epistaxis, what is codominance? What is incomplete dominance? Test cross versus back cross. Correct? Test cross is a type of back cross which is always recessive. Gene therapy, stem cells, induced pluripotent stem cells, hematopoietic stem cells, embryonic stem cells. Evolution, primordial soup, Lamarckism, Darwin, Charles Darwin theory. You must know about the Yamanaka factors. Yamanaka factors, SOX, OCT. Okay, these are all Yamanaka factors.
That is also very, very important. Then receptors, ligand-gated, tyrosine kinase, all the different types of receptors. What is genetic shift and genetic drift? So basically, population kinetics, population genetics, microbial genetics, chromosomal genetics, epigenetics, histone modification, DNA methylation, acetylation, all of these. They're extremely essential. Omics, proteomics, metabolomics, transcriptomics, genomics, cell transport, active, passive, pinocytosis, phagocytosis, microscopy, TEM, SEM, confocal microscopy, okay, phycology, mycology, bacteriology, algae, fungi, virus, bacteria, virology, all the types of viruses, single-stranded, double-stranded, RNA, DNA virus, types of bacteria, aerobic, obligate, facultative, microaerophilic, psychrophiles, mesophiles, thermophiles, acidophilus, basophilus. Then you must know about the Cray-Loxp system. That is important. Enzymology, Lineweaver-Burks, Michaelis-Menten, commutative, non-commutative inhibitions. All right, biomolecules identification tests. What are the synthesis pathway like vitamin D, bile, those ones. So basically, transgenic plants, transgenic, some of the, you can also study about the transgenic, then nitrogen fixing bacteria. These are some of the extra tips from my side which you can go and study. So in today's class, we have learned about the, C. elegans, Caenorhabditis elegans, the vulva. So these are some of the most important topics which I've mentioned to you today on the screen. And let me tell you, इससे question आते हैं whether it is a gene transfer, transduction, transfiction, and conjugation, or on gene mapping, HGP, Human Genome Project, or on linkage numbers identification, bioenergetics like the redox reactions, chemoisosmotic theory, or how much ATP is formed in glycolysis, Krebs, glycogenesis, glycogenolysis, gluconeogenesis, all of those parts. So let me tell you, if you have studied all of this, nobody can stop you to crack these because these are application-based examination. They won't ask you what is a telomere. Okay, they will ask you about the telomerase activity. So it is not going to be straight, it's going to be application-based. So you need to be aware about it. And histone proteins and all this is also additional things which you can study. Also, along with that, you can study the cyclin-dependent factors, CDK, the different markers, RAS, RAF, P53, RAB, and the different types of checkpoints and proteins like kinesin, dynein, all the types of proteins, microtubules, microfilaments, intermediate filaments. These are extremely essential topic which you must study. So I hope that you all have understood today's class, and that is it for today. Thank you so much for your patient listening. Hope you all stay connected with our channel. Do like, share, subscribe if this video has helped you, and do share it with your friends who wish to pursue PhD in upcoming future. Thank you very much. Have a great day.